Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to continue our last session on the share capital. So we have learned so many terms, and we also learned about the issue of shares at par, at premium, and all at discount. So with today's session, we are going to understand about the call scenario. It's obviously a basic meaning and journal entry, disclosure in the balance sheet, and interest on call scenario. And with respect to the calls in advance, its journal entry, its disclosure, and its interest in calls in advance. So yes, we are going to discuss in both the language. So do stay connected with us to understand in both the language. तो आज के सेशन में हम अपना जो लास्ट सेशन में हमने शेयर कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, तो हम पहले थ्योरेटिकली बेसिक एक बेस क्रिएट करेंगे एंड देन आप जो है उन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हम एक दूसरे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज के सेशन में हम कॉल्स इन अरियर के बारे में डिस्कस करेंगे. उनकी मीनिंग्स हो गई, जनरल एंट्री हो गया, बैलेंस शीट हो गया, एक बेसिक आपको रिकॉल करेंगे. उसके बाद कॉल्स इन एडवांस को कवर अप करेंगे, बेसिक्स उनके जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट एंड इंटरेस्ट, दोनों कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो कॉल्स इन अरियर. The name itself speak that it's all about the calls and arrear. There is a arrear means a loss. Somewhere is a loss means there are a situation when the calls has been made. Okay, and when the it has been allotted, the shares has been allotted, and shareholder who are holding that particular kind of shares, n number of shares, they are bound to pay the call money. Okay, whatever the due date the board of director on behalf of the company they ask for. So what if the board asks the shareholder to pay on that fixed date for such payments on the due amount, but the shareholder makes a default in payment of the call money, that particular call money, or on that particular appointed date which is mentioned by the board or the director of the company. So that failed amount, okay, so what that default on the part of the shareholder on that particular due date, okay, it's called as a calls in arrear. That amounts to a calls in arrear. Okay, so it's about when the date director asks you, me the company, you are the shareholder. When you solve the question, you will be the company, I'll be the shareholder. So when I ask you, the company, I calls you, okay, shareholder, now a time came up, I want some money, pay third installment of X amount. Okay, so I made the call upon the shares which I allotted to you. Okay, and now you are bound to pay that particular amount, that call money, that within that fixed date of the particular payment. But what you did, you made a default in payment of that particular call money in that stipulated time, what that fixed time. Okay, so the failed, if you don't able to pay within that duration, within that fixed, it's called an calls in arrear. Okay, so we can say calls in arrear, it's a part of capital, okay, which is called up. I called you, okay, come pay, so which is called up but not yet paid by you. You means a shareholder. Okay, so in this case, you being a shareholder failed to pay the amount due maybe in any of the calls. Okay, and this that amount which is failed from your part, that need to be transferred to a special account known as calls and arrear account. So this is all about the basic understanding. So we learned about the basic meaning. So first we'll deal with calls in arrear. So we learn about the meaning. ओके, सो गिव मी अ मोमेंट टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज. तो कॉल्स इन अरियर क्या होता है, नाम खुद ही बता रहा है, अरियर यानी नुकसान कुछ तो हुआ है. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये समझाया था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के बिहाफ में. अब यहाँ पे मैं डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में, आप शेयर होल्डर. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर और मैं शेयर होल्डर हो जाऊंगी. ठीक है, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक कंपनी के थॉट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अभी मैं कंपनी हूँ, मैं कंपनी के बिहाफ में आपको बोल रही हूँ, आप शेयर होल्डर्स है भाई, कि हमने आपको शेयर तो अलॉट कर दिए थे शेयर होल्डर्स, अब मुझे ना एक इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत है. तो मैंने आपको कॉल किया, कॉल मीन्स नॉट ऑन अ फुल कॉल, मैंने आपको कॉल किया कि भाई अब मेरे को एक इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत है, उस कॉल मनी को पे कर दो इस पर्टिकुलर डेट तक. आपने क्या किया, कोई विपत्ति आ गई, आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने उस पर्टिकुलर कॉल को उस समय में, वो जो अपॉइंटमेंट डेट थी, वो जो फिक्स डेट थी, उसमें पे नहीं किया, यानी आप फेल कर गए, आप नहीं पे कर पाए. उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर. यानी कॉल तो की मैंने बट आपने अरियर कर दी, लैप्स कर दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ये वो कैपिटल का पोर्शन है जो मैंने कॉल किया आपको, कॉल्ड अप, लेकिन आपने पे नहीं किया. सो इट इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाता है, कॉल्ड अप बट नॉट
पेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, तो जब भी ये फेलियर देखा जाता है शेयर होल्डर्स के व्यू पॉइंट से, शेयर होल्डर के पॉइंट से जो ये फेलियर होता है, तो इसके जो भी अमाउंट होगी, जो भी कॉल्स की अमाउंट हो या फर्स्ट कॉल की हो, फाइनल कॉल की हो, कोई भी अमाउंट हो, अलॉटमेंट की भी हो सकती है, ये सारी अमाउंट जो भी फेलियर की अमाउंट है वो ये किस में जाएगी, ये एक स्पेशल अकाउंट में जाती है जिसको बोलते हैं कॉल्स एंड अरेयर अकाउंट। क्लियर, कॉल्स एंड अरेयर अकाउंट। सो वी ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दी मीनिंग, हमने मीनिंग समझ ली, अब हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। So because we'll take everything in a detail in while solving the full-fledged questions, but I want to take before going to the questions, I want to frame a picture in front of you. What if you come across the theory question in your examination? So if it can be found a company who has received an application, suppose, okay, means you applied and paid for say application. So you paid for application rupees 2 per share and you took 50 shares. You buy it, okay. I allotted you, being a company, on behalf of a company, I allotted you 50 shares and you paid a application money of rupees 2 per share, okay. But when I asked you to pay for the allotment money, which was say rupees 3 per share, okay, on these shares, and after some time I asked you to okay, I asked you to pay rupees 3 per share on the case of allotment money, but what had happened, you failed, you are not able to pay in that particular stipulated time. Then the amount of rupees 3 per share, okay, 3 per share on 50 share, 3 into 50, that is 150. This amount, okay, which was due on allotment, okay, are called as calls in arrear. This amount is calls in arrear, okay, calls in arrear. This is the main purpose, because we have to open this calls in arrear account too, because we need to close the allotment, because until and unless we won't close, an account keeps on outstanding. So that's very important to close the allotment or any call in which the default is on the part of the shareholder. So that need to be closed because it's not yet received, and that amount need to be transferred into the calls in arrear account. A separate account need to be created. Okay, so this is the basic example. Does it include only one shareholder to? No, there are thousands of shareholder and default can be from any part. Suppose you make a default of say 50 shares. Someone is there who made a default of 100 shares. Some made a default of 25 shares. Depends on number of shareholder. If in your questions there are 2 or 3 like M, N, Mr. N, you have to solve for everyone, okay, and that's amount, the arrear amount need to be transferred into a calls and arrear account. Why this is need to be transferred to an arrear account? Because we called you, we means the company called you to pay that amount but you failed to pay it, so that is very important to close that particular allotment or first call or second call closure, that is need to be closed, and the difference of loss, that means an arrear from your side, the default from your side need to be transferred to the correct call scenario account. Hope it's clear. So this is all about the example. So give me a moment to conclude in the other language. मानिए आपने अप्लाई किया कंपनी में और आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया तो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने 50 शेयर ले लिए, आपको शेयर अलॉट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप कुछ समय बाद मैंने आपसे बोला भाई अब हमें एक इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत है, तो हमने आपको अलॉटमेंट के लिए बोला कि आपकी अलॉटमेंट 3 रुपए पर शेयर है। आपने जितने भी शेयर लिए हो, आपने 50 लिए, माने कोई और होंगे जिन्होंने 100 भी लिए होंगे, ठीक है। आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर समय पे आपने जो 3 रुपए पर शेयर के लिए मैंने आपको बोला था पे करने के लिए, आप फेल कर गया, नहीं पे कर पाए। तो मान के चल रहे कि आपके पास 50 थे शेयर्स और 3 रुपए के हिसाब से कितने हुए, 150 रुपए आपने मानिए नहीं पे किए, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉल्स इन अरियर। इससे जो अलॉटमेंट आपने नहीं पे की, वो अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो अरियर हुआ आपके साथ, जो आपने डिफॉल्ट किया है, उसको कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर। सो हमने क्या ट्रांसफर किया कॉल्स इन अरियर में, ये आपने समझ लिया। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो we learn about the meaning, we have gone through the example. Please do not make this example as a rule of thumb and write should not be read by everybody in the here who are listening this session, otherwise examiner could find out that you people gone through the same sessions. So use your insight, we'll do more numerical with time, you can take that benefit also. Okay, so this is about the meaning and example. So let's discuss about the journal entries. Okay,
So journal, that is important, because what we have done so far for application, you gave me money, bank account debit to share application. I'm just recapitulating, recalling you, okay? Because I don't want you to memorize the journal entry. I want you to feel each and every transaction, understand every transaction, okay? To share application, why we did share application? It's because you applied for the share application. Since I don't know you, first you have to pay me, and after that I'll raise the share application debit to share capital, because now for if I give you an allotment, now it's become my share capital. Clear? Nothing to memorize here. Okay, now I called you for the first installment, that means your allotment money. So when I asked you for the first installment, that means I know you are my shareholder. That's why I will make a due entry first. So share allotment debit to share capital. Okay, so I due everyone because I know I'm going to collect from everyone. Okay, suppose for the purpose of example, there are 10 shareholders and each have 100 shares. Means there are 10 people. Okay, there are 10 people and each one is having 100 shares, supposed to be. It's an example. So each one is having 100 shares and there are 10 shareholders. I know I'm going, if I call all 10 people to pay this, everybody is ready to pay me the application money, oh sorry, allotment money. Okay, so what I raise the share allotment. Yeah, it may be a first call, it may be a second call, it can be anything. Okay, but what if I called everyone and one is failed or two are failed? Okay, that is you failed and you made an arrear. So that means my capital will reduce. My capital is not actually increased from that portion. That means for against that allotment, okay, you failed. You not failed against me. You not failed again because allotment will become capital. You failed with allotment, not with the capital. My capital will reduce. It's not your capital. My capital will reduce, but you failed with the allotment. But I'm a company. I have to pass a journal entry into my books. So what I have to do is, Mr. X failed to pay me. Mr. X failed to pay me. So what I have to pass an entry for calls and arrear when there is a arrear in calls and arrear account debit. Okay, calls and arrear account debit to share allotment. I want you to understand, do not memorize. It's my very humble request. I always want to ask you people, do not memorize the things, try to understand things. Okay, so now it's a calls and arrear. Why I pass this entry calls and arrear? Because the allotment get reduced because X1 is not paid me, make a default in making the calls. It may be a share allotment, it may be a first call, it may be second call, third and final call, it can be any call. So what this amount to be disclosed, like 150 as we explained above. So the amount should be the failed amount, the default amount. Okay, the default amount. Clear? I hope this journal entry is clear. I don't know what you have learned in your childhood, that means your 11th 12th or graduation, but here I want you to understand the things, and if there is a doubt, make it clear. Okay, now there is a call scenario against that particular allotment. Okay, so suppose there might be a situation that after a few days, because on stipulated date you fail to pay, and on that I need to close my books of account, I mean the company, but after some time you me as a company, I received from you an amount as a call scenario with interest. On the subsequent day you are ready to pay. Okay, I failed on that particular day, but now I can pay. So now you are ready to pay. So on receipt, on letter date or subsequent date, we can say that. So obviously to receive, I am receiving, my bank account will increase. My bank account will increase. That is definite entry, bank account. And to think, it will be calls and arrear account. Why? Because against that allotment, I raise the calls and arrear. Now I need to be closed because you have paid me amount against that calls and arrear which you made on that specified date. I hope you people are satisfied. Calls and arrear account. Okay, so there is no need to memorize. I hope you people understand very clearly. Okay, so give me a moment to conclude another language.
हमने जब जर्नल एंट्री बेसिक समझी थी तो हमें ये उम्मीद है कि आपको वो सारी एंट्रीज क्लियर हुई। तो जब भी आप किसी शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, मैं कंपनी के पास पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहा था हमने, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्यों किया था? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन के लिए है, आपने पैसे दिए थे, अप्लाई किया था। अब मुझे पता चल गया आप शेयर होल्डर बनने में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने ये अलॉट आपके शेयर एप्लीकेशन को अपना कैपिटल मान लिया। तो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आई होप आप इसे याद नहीं कर रहे हो। अब मानो कुछ समय के बाद मैं यानी डायरेक्टर आपसे बोलो कि भाई अब मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए, यानी शेयर अलॉटमेंट चाहिए। हो सकता है फर्स्ट कॉल की बात कर रही हूँ, या हो सकता है सेकंड कॉल या थर्ड कॉल, किसी भी कॉल्स की बात कर रही हूँ। मैंने आपसे पैसे मांगे, लेकिन आप में से कोई एक ऐसा शेयर होल्डर होता है जो वो देने में, उस पर्टिकुलर डेट में जो फिक्स डेट होती है कंपनी की, देने में वो नाकामयाब हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाते हैं। आप अगर मानिए डिफॉल्ट कर गया, किसके अगेंस्ट में किया? या तो वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट किया होगा, फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट किया होगा, इन्हीं आपसे जो मांगा गया उसके अगेंस्ट में ही तो डिफॉल्ट हुआ है ना। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट है, नहीं तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर हो गया, क्यों? क्योंकि हमने आपसे अलॉटमेंट मांगी थी, वही आप नहीं दे पाए, या सिर्फ फर्स्ट कॉल मांगी थी वो आप नहीं दे पाए, इसलिए उसको क्लोज करेंगे और कॉल्स एंड अरियर क्रिएट कर लेंगे। मानिए कभी फ्यूचर डेट में, क्योंकि वो स्पेसिफाइड डेट में आपने नहीं पे किया, फ्यूचर कुछ दिन बाद आप कैपेबल हो जाते हो पे करने के लिए, तो आप मेरे पास आओगे, कहोगे ये ले लो भाई, कॉल्स एंड अरियर का पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा ले लो और मेरा ये अरियर हटा दो। तो मैं कौन, कंपनी के पास पैसे है, बैंक अकाउंट बढ़ गया, किसकी वजह से है? कॉल्स एंड अरियर जो हुआ था ना उस दिन, उस वजह से है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट जो भी ड्यू बची थी वो पे कर दी गई है। आई होप आपको ये एंट्रीज क्लियर हो गई हो, ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं हो। फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, वी ऑलरेडी कवर्ड विद द जर्नल एंट्री, नाउ लेट्स गो टू द बैलेंस शीट, go to the balance sheet. So in case of a balance sheet, what a disclosure, it's a calls in arrear, okay. So calls in arrear, because I being a company, on behalf of company, I called up, ठीक है। So in the balance sheet side, okay, on the liabilities side, okay, so there are a share capital, under the head share capital, you have a called up capital, okay, because I called you the shareholders, but you failed to pay in the, okay. So it is shown in the balance sheet until these particular shares, means either it can be repaid or forfeited, means until and unless till the time it's a arrear, it should be shown as in calls in arrear. So called up, I called you but you failed, calls in arrear. I hope you people satisfied. Okay, calls in arrear. So give me a moment to conclude in other language. तो बैलेंस शीट में हम इसे लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के अंदर, मैंने आपको कॉल किया था, मैंने यानी कंपनी ने कॉल्ड अप, बट आप फेल कर गए, तो कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस हो जाएगा आपका कॉल्स इन अरेयर का, ठीक है, बैलेंस शीट में। लेकिन ये तभी तक दिखाना है हमें जब तक या तो कोई फॉरफीचर नहीं हो रहा आगे, फॉरफीचर को हम नेक्स्ट सेशंस में समझेंगे, या आपने क्या किया, पेमेंट नहीं रिसीव कर लिया, यानी विद इन बुक्स अकाउंट क्लोज होने से पहले आपने पेमेंट नहीं रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे जो है जर्नल एंट्री हो जाती है कॉल्स इन अरेयर की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरेयर, interest. So interest on calls in arrear means the company is able to, is standing on the to recover that interest on whatever the calls in arrear, provided that should be given into the article of association of the company. So there might be a situation if the articles are silent, what will do? So it should be mentioned in article of association, and okay, what if it's silent? What if the article of association is silent? There is table F. There is table F of schedule 1 of the Companies Act 2013, which is applicable that if the sum which is called, means called by the company of for the particular but not paid, okay, within that particular appointment date, so the person who had failed to make the that amount on that particular appointed day, that means an actual date of payment, okay, the rate of interest should be 10% per annum. So if it's gained, then it will be 10%
per annum. Okay, so me being a director on behalf of a company, I have a right to waive off this payment of interest on calls and error. It's not in like, okay, I have to collect it and each and every cost. No, I have a right, I being a director of the company have a right to waive off this interest. So this interest is recoverable according to the provision, whatever the provision with regard to the interest on calls and arrear given in the article of association. And I told you, what if the article is silent? There is a table F of Schedule 1, Table F of Schedule 1 of Companies Act 2013, Schedule 1. Okay, so it shall be applicable that if there is a default, okay, on that particular appointment date, that rate should not be 10%, means maximum is 10%, it can be lower. So this is a maximum limit. Okay, and being a director of the company on behalf of company, I have a right to waive off the payment of for interest on the calls and arrear, and this interest on calls and arrear need to be transferred to the profit and loss account at the year end. Okay, give me a moment to conclude in other language. नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर. इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपनी कई बार जब कॉल्स एंड अरियर होता है ना कि आपने इतने दिन नहीं पेमेंट किए तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे. तो जनरली ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, लेकिन कई बार आर्टिकल जो है इस मैटर पे शांत रहता है, साइलेंट रहता है. तो उस केस में कंपनीज के टेबल एफ शेड्यूल 1, टेबल एफ शेड्यूल 1 जो कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है, उसके तहत हम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आपसे, यानी अगर आपने अरियर किया है तो उस अरियर के अमाउंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी नॉट एक्सीडिंग 10%. उससे कम हो सकता है, 10% हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए. बीइंग अ डायरेक्टर, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी के बिहाफ में, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं आपका ये इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो माफ़ कर सकते हो. ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट हम कलेक्ट करेंगे, कंपनी कलेक्ट करेगी, उस अरियर के ऊपर वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी हर साल के अंत में. ठीक है, तो हमने अभी समझा कॉल्स एंड अरियर क्या होता है. ठीक है, अब अगेन इंटरेस्ट में एंट्रीज कैसे डील करेंगे. ठीक है, so how we'll deal with the entries on interest. So we have calls and arrear again. So now we have to collect the interest from the shareholders. Suppose you X are a shareholder, Y a shareholder. So we have to do interest. First we have to due the interest from shareholders. So shareholders account debit to interest on calls and arrear. Interest on calls and, I'm writing shortcut, please avoid for the purpose of examination. So what if you pay, means a company received the interest or actually realized, ठीक है, the interest, so there is money which comes in. So bank account debit from whom? From the shareholder to shareholder account. Okay, and now we are required to transfer this interest at the year end. So transfer to P&L account. So interest on calls and arrear debit account, ठीक है, to P&L account. Okay, profit and loss statement or statement of profit and loss account. Why it's credited? Because it's on arrear from your part. You being a shareholder pay me the interest. For me it's a inflow, it's a part of portion, it's a part of credit. So interest on calls and arrear account debit to profit and loss account. So give me a moment to conclude this in other language. तो जब हम इंटरेस्ट जो है 10% से ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते. अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी? जनरल एंट्री पहले तो हम शेयर होल्डर जो है उनसे लेंगे इंटरेस्ट. तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरे, इसको हमने ड्यू कर लिया. याद नहीं करना क्योंकि शेयर होल्डर से लेना है, इंटरेस्ट लेना है. ठीक है, और उसके बाद इन शेयर होल्डर से पैसे निकलवाने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स. क्लियर है? अब ये जो एरियर पे पैसे मिल रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप शेयर होल्डर दे रहे हैं कंपनी को क्या ऐसे बैठे बैठे मिल रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने ड्यू टाइम में दिया नहीं, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन आपका कॉल्स एंड अरे अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. क्लियर है?
ठीक है. So we have covered everything about the calls and error, its meaning. We covered the meaning, we covered the example, we covered the journal entries, we covered the balance sheet disclosure, we covered on interest, and we also covered about the journal entries related to the interest on calls and error. Now moving ahead, we are going to discuss about the advance. Okay. So calls in advance. The name itself called where the situation came up where the shareholders pays well in advance. Means a company, meaning a company receive an amount, okay, which is on unpaid on shares. So from the shareholder, okay. Even I didn't called you. Okay, so I'm not able to call up on the, okay, and then also being a shareholder you paid that things in advance. So there are number of shares which I have allotted to n number of a person, which is maybe some smaller, and to you people ready to pay them off. So what if you pay an extra amount? A company sometimes pays, shareholder sometimes pays well in advance to the shareholders, okay, sorry, to the company. Okay, so that is called an advance. That particular portion which is paid well in advance, there are some situation on which advance can occur, not in all the situation. So the amount, okay, when the company receive an amount which is remaining unpaid, means I didn't ask you to pay unpaid on shares, okay, but you paid it as a shareholder, okay, which is not been called up. I didn't call you to pay, but you paid it, okay. So that is subject to the calls in advance, and this is authorized in article of association. So there are number of shares which is allotted, maybe a situation, in what situation calls in advance we can see. So section 50 of the Companies Act states that a company, if authorized by article of association, accept from any member the whole or part of the amount remaining unpaid, okay, even if not the part amount has been called up. That means I didn't ask you to pay, but you paid it, okay. And action section 50 of Companies Act 2013 also states that member of the company limited by shares shall not entitled to any voting right in respect of that advance amount. That means I didn't called you, but you paid me, but don't think you will get the right of speaking there. So that but that is only applicable when the company is limited by shares. That means in there are two situations in which we can see the calls in advance. Generally when there is a oversubscription of shares, and second when the shareholder, you, being preferred to pay it, okay. So this can be a situations we can see the calls in advance situation. So we understood about the meaning, we understood about the situation. Okay, so give me a moment to conclude in other language, then we'll understand about the balance sheet and general treatment, and then interest. एडवांस क्या होता है भाई, कई बार मैंने आपको बोला नहीं, आपको कॉल्ड नहीं किया और आपने पे कर दिया, या कई बार आपने जब अप्लाई ही किया था तो हमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए थे, तभी भी एडवांस हो गया, समझ रहे हैं। तो जब भी हम एज ए कंपनी आपसे ना बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे आप शेयर होल्डर से ले रहे हैं, और आपको छोटी सी अमाउंट थी, आपको कॉल नहीं, आपने कहा कौन बार बार पे करे, एक ही संग पे कर दो। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आर्टिकल में मेंशन होनी चाहिए। सेक्शन 50 जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 का, ये बताता है कि कंपनी जो है अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल रहा है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स से, चाहे वो पूरी अमाउंट हो या पार्शियल अमाउंट हो, पार्ट पेमेंट हो, ठीक है, और कॉल्ड अप नहीं की हो, तो वो उसे कलेक्ट कर सकता है। या अगर कोई कंपनी ऐसी हो जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय मतलब शेयर्स की कंपनी हो, ठीक है, तो अगर आपने मेरे को एडवांस में ये कॉल्स इन एडवांस में दे दिया है, मतलब मैंने आपको कॉल्ड नहीं किया, आपने पे कर दिया है, तो आप ये मत मान लीजिएगा कि आपको उस एडवांस के प्रति कोई भी प्रकार का वोटिंग राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक मीनिंग थी कि एडवांस क्या होता है और किस, उसके बाद सिचुएशन, कौन कौन सी सिचुएशन में एडवांस देखने को मिलता है। अगर कभी ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर्स, तब भी एडवांस मान लिया जाता है, या कभी आप एज अ शेयर होल्डर आप चाहते हो कि आप दे दो क्योंकि आप बार बार नहीं पे करना चाहते, तब भी ये कॉल्स इन एडवांस मान लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट विल डिस्कस दी बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री टुगेदर। बैलेंस शीट, okay, so this calls in advance which is received, that cannot be a capital. Why? Because I didn't call you to pay it, so how can I treat that amount as a share capital? So that is why it is need to be shown into a separate books of account, separate account as a calls in advance on the liability side of the balance sheet. Okay, so there is a need to prepare a separate account of calls in
advance account. Why? Because I didn't ask you, I being a company, on behalf of company, being a director, I didn't ask you, I didn't called you to pay that, but you choose to pay. Okay, so now being a shareholder, you pay me. So that's why it's my liability. I'll treat it as my outstanding, the liability to the sundry shareholder. Okay, and that's why I treat that advance amount as in my liability. Okay, so that's why I disclosed as current liability. Why current? Because whenever the situation come, when I called it, it need to be adjusted. Till then, it will be current liability for the shortest duration in the balance sheet. Okay. Okay, so do you think the on this against on this calls in advance the shareholder right to receive the dividend? No, not at all. If I'm not taking it as a capital, how can I pay the dividend for it? So it should not include any dividend portions to be paid on calls in advance. Okay, so give me a moment to conclude in other language. Disclosure कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? आपसे आपने ना मुझे वो पैसे दे दिए जो मैंने मांगे नहीं थे, आपको कॉल नहीं किया था, ठीक है, तो ये मेरे शेयर कैपिटल का तो पार्ट बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसको हमने एक सेपरेट अकाउंट में दे देना है क्योंकि हमें वो लेजर क्लोज करना होगा। अगर आपने जिसके प्रति भी पे कर दिए वो कहलाएगा कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने दिखाना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। क्यों लायबिलिटी? भाई ये आपकी मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मतलब आपने मुझे पहले ही पे कर दिया है तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। एक आउटस्टैंडिंग है, जब कल को डेट आएगी तब एडजस्ट होगी, तो वो छोटा ड्यूरेशन है जब भी हुआ, तो इसीलिए इसको हम करंट लायबिलिटी का पार्ट मानेंगे तब तक जब तक कि हम आपको कॉल्ड नहीं कर लेते। तो आपने एडवांस दिए तो हमने इसे मानेंगे कॉल्स इन एडवांस। किस तरफ? करंट लायबिलिटी के अंदर। क्यों करंट लायबिलिटी के? आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर अब मैंने इसे कैपिटल नहीं माना, तो क्या आपको लगता है इस पे आपको डिविडेंड देंगे? भूल जाइए, इस पे आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसे मैंने कैपिटल ही नहीं माना, मैंने तो इसे करंट लायबिलिटी मान करके रखा है, ठीक है। तो इसलिए इस पे किसी प्रकार का डिविडेंड नहीं मिलता। आई होप आपको ये डिस्क्लोजर क्लियर हो। चलिए जर्नल एंट्री की ओर बढ़ते हैं। So it's very important to understand the journal entry. Okay, so I told you it's a calls in advance. It may be against any share allotment, it may be against the first call, second call, it can be on anything. Okay, so I received the advance against, suppose you paid me advance during the time of application. Okay, so I have to transfer that amount of calls in advance. You paid me at the time of application, so I received the call money. I means a company received your calls in advance. So obviously you people learn very well bank account debit because I am receiving that calls in advance from you to calls in advance account, because I told you we need to create a separate entry. So whatever the amount I received as an advance, I'll show here. Okay, and then when the calls are made, suppose after n days or n months there is a call, means by a director on behalf of a company, I called you to pay. On that day you don't need to pay because you already paid it, but I have to mark that adjustment against the, say, that particular call, either it's an allotment or first call or second call or third or final call, it can be anything. Okay, so when the due date I called you, so it will be calls in advance which you already paid me, account debit, to whatever be, say, share allotment. I'm taking example as for against share allotment. It may be a share first call, second call or anything. I hope you understood the journal entry because there is nothing means value addition on this. Okay, so there might be a situation when there is a over subscription. We will discuss in very detail about over subscription, but I want to brief highlight that whenever you receive the application money, what you do? Bank account debit to share application, and that share application to share capital. But what if you receive some amount which is of not application but of you decided to put it for allotment? What you do? Share application account debit to calls in advance. Okay, and whenever you receive that call money, then bank to calls in advance, and then against when the calls have been made, that need to be adjusted. This will not clear you now because when we do pro rata, it will be very easy task at that particular time.
Okay, so give me a moment to conclude in other language. Okay, so journal entry accounting treatment क्या होगा, आपने कॉल्स इन एडवांस, हमने पैसे ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस की वजह से पैसे हुए, और कल की डेट को जब हमने आपको कॉल किया कि आपने ये अलॉटमेंट पे करनी है या फर्स्ट कॉल पे करनी है, तो वो कॉल्स इन एडवांस जो आई हुई थी उस पर्टिकुलर डेट को जाके एडजस्ट हो जाएगी उस पर्टिकुलर कॉल्स के थ्रू. ठीक है. ओके, मूविंग अहेड विथ इंटरेस्ट पोर्शन. So interest portion. So now I received in advanced. Okay, so amount I received, I means the company received well in advance, is a debt for me because I kept your money with me. Okay, so this is a debt for me, and the company is liable to pay the interest on that calls in advance. Okay, from which date? From date of receipt from you till the due date or call schedule date. Okay, or whenever it becomes due. So hope you get the calls in advance is the debt for company. Please do not memorize, try to understand why it's a debt of company, because I received amount from you well in advance, it's not due yet. Okay, so I received from you, so it's for me, a company, it's a debt, a liability on me. Okay, so it's an amount which I received excess as a calls in advance, so I have to pay the interest from date of I received from you till the actual date of calls due. Okay, actual date of payment. However, the article of the company should specify the rate regarding that interest which is applicable on calls in advance. And what if article is silent? Table F of Companies Act 2013 will be applicable. Okay, which is completely depend on the board of director to decide the rate of interest, but they mention the first we will check AOA, and what if AOA is silent? We will look for Table F of Companies Act 2013, and as per Table F Companies Act 2013, it's leave the matter on the board of director who has to decide the rate of interest, but that should not exceed, that means the maximum rate is 12% per annum. Okay, but this is the maximum. A board may fix the lower or equal to the 12%. So this interest on calls in advance, it's my liability, my means the company liability, and it should be charged against the profit of company. Okay, and it is that amount which is being paid without any earning the profit of the company. Okay, so what the journal entry will look, obviously you received being a shareholder, I'm liable to pay you interest from me, company pocket is going out against what? Interest, na? Interest on calls in advance. So interest on calls in advance account debit to bank because my pocket is getting loose. Okay, and because I'm paying that amount, okay, that I pay. Okay, if it is against in any other non-monetary form, you can do interest on calls in advance to shareholder. Okay, and then we need to transfer it to the P&L account, P&L account debit to bank or shareholder. Okay, to interest on calls in advance account. I hope you people satisfied with this particular journal entry. Okay, so give me a moment to conclude in the other language, then we'll wind up. सो हमें जर्नल एंट्री, हमें इंटरेस्ट की बात, जो कि अगर आपसे मैंने पहले कॉल्स ले ली, एडवांस में आपसे पैसे ले लिए, तो मेरे लिए एक डेप्थ है, उधार है. ठीक है, मेरे ऊपर बर्डन है. ठीक है, तो अब मेरे को आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे पहले पैसे लेकर के रख दिए. तो कब से कब तक की पेमेंट होगी? जिस दिन मैंने आपसे पैसे लिए हैं और जिस दिन वो शेड्यूल डेट आएगी ना, जब भी कॉल्स की जाएंगी उसकी पेमेंट की डेट आएगी, तब तक की मुझे आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी. अब इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? पहले तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ मेंशन है तो वो रेट एप्लीकेबल होगा. अगर मानिए आर्टिकल साइलेंट है, उसके ऊपर जो टेबल एफ है कंपनीज एक्ट 2013 की, उसमें ये मैटर लिखा गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है रेट फिक्स करने के लिए, बट हर हालत में वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी वो 12% या उससे कम हो सकता है. ठीक है, तो अब मेरे लिए कंपनी के लिए एक तरीके से चार्ज है. ठीक है, हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट है हमारा ये इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें उससे नहीं मतलब, इंटरेस्ट तो कंपनी को पे करना पड़ेगा क्योंकि डेप्थ. आप ये नहीं बोल सकते भाई हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, नहीं, आपको पे करना पड़ेगा. क्लियर? जर्नल एंट्री. अब कॉल्स, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस. अब मैं बैंक, कंपनी आपको पैसे दे रही हूँ तो कंपनी की बुक्स बन रही है,
तो मैंने आपको क्या किया, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपको पैसे दिए, तो मेरे बैंक से गया, बैंक के पैसे जा रहे हैं, बाय बाय, अगेंस्ट किसके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेटिस्फाई हो, बिल्कुल। अब इसे हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है, स्ट्रेट अवे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? आई बिलीव कि आज हमने जितनी चीज़ें और डिस्कस की हैं, ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि अकाउंट्स है ना, और कोई भी सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, कितना याद कर लोगे, कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ रटते रह जाओगे। बेटर है अंडरस्टैंड कर लो, वो थोड़ा सा इजी टास्क है, और ज़्यादा इजी टास्क है अंडरस्टैंड करना। सो आई बिलीव विद टुडेज सेशन यू एबल टू add some more value addition in your language. If do like it, and if no, whatever inputs you like to share with me, please share. Okay, and I want you people, if you learn anything in the past, drop down there. Okay, bring a new knowledge and try to understand it, because to memorize, to do memorization or rectification in these, it's a lot, and understanding is quite easy. So try to understand it as easily as possible. So see you in the next session on more commerce and accountancy. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.